remember who you truly are. Mm. And through those words, my following question is, Mother Mary, and how are we going to reach that point? And then she started showing me a beautiful path, a beautiful journey with different stages for all of us to reach that goal. And the first one of those stages was that for her, it's really important that we all of us get to understand what is happening nowadays. What is this huge transition that we are facing? That for some people is called a migration from the third dimension towards the fifth dimension. So other people talk about knitting a new earth. Some other people are saying that we're going to experience a huge consciousness shift. All of this is happening here and now. And for her, it's very important for all of us to understand, because this will bring clarity in our path. So what are the dimensions? The dimensions are basically levels of consciousness, the ways in which we can experience reality. The most dense dimension that we can experience as human beings is the third dimension. In the third dimension, because of the density of this reality, we are going to experience kind of a disconnection from the source. We are not disconnected, but we are going to feel as if we were disconnected from the source. And once we are disconnected from the source, we do not remember who we are, from where we are coming from, what is our purpose here, and everything seems like very blurry. And this kind of confusion is what led us to come into survival mode. And in this survival mode, we start being absolutely attached to the material world, to our physical body. And somehow we identify ourselves with our body, with our subtle or divine essence. And it's in this world of polarities, in this very dense reality, that we're going to experience not only this huge disconnection, this attachment to the material world, but also we are going to start classifying everything into good and bad. We're going to create duality in everything. And when we do such a classification in terms of our relationships, we end up perceiving that people are either our enemies or our friends. And when we create such a polarity in the way in which we relate to everybody surrounding us, we will end up building a world based on on what Anandaji has named patriarchy model, a wage of division, a world of tension, a world in which we compete with each other's, a world of scarcity, a world in which the predominant feeling is fear. There is nothing that is most contradictory to love than fear. It's not hatred, what is the opposite of love, but actually it is fear. And Anandaji, would you like to translate? Yeah. So, कमिला जी बोल रही हैं कि अभी जो टाइम है इतना इम्पोर्टेंट टाइम है कि अभी अपन एक तरह से ट्रांजिशन कर रहे हैं थर्ड डिमेंशन से फिफ्थ डिमेंशन की तरफ। थर्ड डिमेंशन की रियलिटी को वो थोड़ा सा उसका विवरण कर रही थी, जो 3 डिमेंशन में अपन रहते हैं ना, तो वो कैसा लगता है वहाँ रहना 3 डिमेंशन में। एक तो बहुत डेंसिटी है इस डिमेंशन में जो 5th डिमेंशन में नहीं होती। तो ये डिमेंशंस क्या होते हैं, ये लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस होते हैं। थर्ड डिमेंशन इज लाइक वेरी लो लेवल, मोर लो लेवल, फोर्थ डिमेंशन हायर, फिफ्थ डिमेंशन इवन हायर, and the whole earth is now transitioning into this from third to fifth dimension. तो थर्ड डिमेंशन की क्या फीचर्स होते हैं, क्या रियलिटी होती है, उसमें सब कुछ अपन क्या करते हैं, अच्छा बुरा जजमेंट करने लगते हैं अपने बारे में, दूसरों के बारे में, अपने शरीर के बारे में, सब जजमेंट में आ जाते हैं, अच्छा बुरा ऑल ऑफ दिस। और थर्ड डिमेंशन में काफ़ी डेंसिटी होती है, हर चीज़ में अपने को लगता है कि जैसे कि एलियनेशन आ गया है,
मैं नहीं हूँ, अपने आप को खोजने लगते हैं, क्योंकि जो दिव्य कनेक्शन था, जो अपना होम, दैट फीलिंग ऑफ होम वाज देयर, वो नहीं है अब। लग रहा है कि मैं कहाँ हूँ, एकदम ऐसा अजीब सा लगता है थर्ड डिमेंशन में, बिकॉज यू इन अ वेरी डेंस वर्ल्ड थे। तो इस डेंसिटी से निकलने के लिए अब क्या करना है, और वो मदर मेरी मैसेज देंगी कि कैसे हम इससे ट्रांजिशन करें फिफ्थ डिमेंशन में। हम इस वर्कशॉप के बारे में भी यही थोड़ा बताया जाएगा, क्या प्रोसेसेस हैं, कैसे अपने आप को जानना है, क्या बॉडी प्रोसेसेस हैं, वो सब। तो वो कमिला जी अब नेक्स्ट बताएंगे। सो आई जस्ट टोल्ड देम अबाउट द थर्ड एंड फिफ्थ डिमेंशन बिकॉज yeah, I think the way we're translating, if you speak a lot, I'll probably forget some of the things that you said before, you know. Okay. So, but you could, if there's a key point, you could tell me, and then I could just, सारा Okay. translate नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि उसका flow break हो जाता है। मगर जो जो उनके key points होंगे, वो मेरे को बोलेंगी translate करने के, और वो मैं कर दूंगा. So you just tell me all the key points, and then I'll stop and translate. Because I don't want to Okay. break your flow all the time also. Okay, Anandaji, thank you. Yeah. So, it is because of this density of the third dimension that we have been fighting between us and even killing us because of our beliefs. Because in this third dimension, we perceive the world in such a polarity and duality that we tend to think and to believe that my God is the only God, that is the true God, and your God is not the true God. And all of this creates like an atmosphere of enmity, of competition, of hostility, of aggression. And we have been killing us through so many years and fighting and creating a lot of wars because of this reason. But in this moment, Mother Mary, what she is telling me is, tell them that still I fully feel and see you through your light, and I can recognize your innocence. All of you, my beloved children, my daughters, my sons, all of you are so pure within your heart. If you could see in the way in which I appreciate you, you will be full of joy. There is only innocence in your hearts. All of these things doesn't make you sinners. You're just not knowing what you are doing. It's just a matter of ignorance because you're not aware. But soon, clarity will come. The sun will shine above all of you, and we will start remembering. Clarity will bring peace in this world. कितना प्यारा मैसेज मदर मेरी ने अभी भी, आई स्टिल चैनलिंग, It's okay, you can translate. तो कितना प्यारा मैसेज दिया अभी अभी मदर मेरी ने। तो बोला, तुम सब मेरे प्यारे बच्चे हो, मेरे बच्चों, तुम कितने मासूम हो, और मैं तुम्हारी लाइट को देखती हूँ। और ये कोई, जैसे अपन बोलते हैं ना, पाप और पुण्य, ये सब नहीं होता ऐसे जैसे आप सोचते हो। सबकी लाइट देख रही है मदर मेरी, और सब जजमेंट्स के ऊपर जो आपकी जो आत्मा है उसको देख रही हैं। और अब टाइम आ गया है जब ये सारी जो डुअलिटीज़ हैं, पोलैरिटीज़ हैं, इन सब को निकालेंगी। और जैसे कि सूरज की रोशनी आप पर गिर रही है, तो मदर मेरी काफ़ी प्यार से एक माँ के रूप से आपको देख रही हैं, पूरा प्यार जगा रही हैं आपके अंदर। और उस प्यार की भावना से आप उनको जानिए जैसे कि आपके एकदम मदर हैं। मदर जज नहीं करती। सो ये सारे जजमेंट्स में वो जी रहे हैं, उससे निकलना है अपने को, और अपनी इनोसेंस को जानना है। यस। Kirandaji. It cannot be expressed the way you said it because that was coming directly from Mother Mary, and unless we do word to word. It's beautiful. As you start channeling, it was just amazing, and the energy. Thank you, Nandaji, and thank you for Mother Mary. She's with us. So now we are entering
or we have already started like ascending, and we have already started like making our frequencies like go higher and higher. Hmm? And there's a lot of people right now that they are still remaining in the third dimension, but there's more and more people that nowadays they are starting to hear this inner call to come and to pursue their inner spiritual path, isn't it? That there is like we hear that there's each day there's more people much more interested in doing meditation, in coming into yoga, or to come close to the goddesses through prayers. And while we are doing all these inner efforts, what is happening is that we start stepping into the fourth dimension. The fourth dimension is not our final stage to reach. And why? Because the fourth dimension is very unstable dimension. It's still a dimension in which duality is very strong, and it's very easy for all of us once we start reaching to the fourth dimension to come back into the third one, because it's not very stable. What are we going to face, or what we are already facing in the fourth dimension? Because there's a lot of people that now are reaching fourth dimension and even fifth. And in the fourth dimension, through our personal work, we start activating our inner or observer. We start activating our intuition. So this is very beautiful moment for all of us, because like for the first time, we stop just perceiving reality and the world through our physical senses, and we started acquiring another way of understanding and comprehending life. So through intuition, the possibility to tap into higher frequencies, it's much more easier. So fourth dimension is a dimension in which we are much more aware of things. And if we were in the third dimension, creating relationships in which I could see that some ones were my friends, these ones were my enemies, and somehow there was like this dichotomy created. In the fourth dimension is still duality, but now, I mean, I am not going to identify, let's say, myself with the victim, and I'm going to punish the victimizer, or to point the victimizer. But in the fourth dimension, what I'm going to experience is that these people that somehow cause me suffering, these people that maybe say something that didn't make me feel very well, now I can understand that these persons are somehow teaching me something. So there's still the polarity, there's still the dichotomy, but now the other one is like a teacher for me. It's like my master. It's someone that it's in my path because it's teaching me something, and I can identify myself as the student. So we are still in duality, but it's a different way of understanding what's going on in our lives. In the fourth dimension, as a difference with the third one, we're going to start feeling responsible for the things that we are doing. This doesn't happen in the third dimension. In the third dimension, we still feel that we are somehow like victims of the other ones, or victim of the circumstances. But in the fourth dimension, we feel that we are connected with our inner responsibility. And this is like a huge change also, because the more responsible we feel with ourselves, with our lives, the more we are close to obtain liberation, let's say, because now we feel and we perceive that the whole process of our lives is in our hands, now in other hands. ओके सो कमिला जी बता रही हैं थर्ड डिमेंशन से अपन जाते हैं फिफ्थ डिमेंशन में, तो बीच में आता है फोर्थ डिमेंशन। तो फोर्थ डिमेंशन की क्या स्टेजेस हैं? थर्ड डिमेंशन में जैसे कि अपना सारा जीवन अपने आउटर सेंसेस में अपन परसीव करते हैं रियलिटी, मगर उसमें कुछ अंदर का ऑब्जर्वेशन कुछ भी नहीं होता। तो जैसे कि जानवर भी जी रहे हैं तो वो बाहर की दुनिया में जी रहे हैं। जब अपन बड़े होते हैं तो बाहर की दुनिया में रहते हैं, कुछ इतनी अवेयरनेस नहीं होती। जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है अवेयरनेस बढ़ने लगती है और अपन अंदर की तरफ जाने लगते हैं।
तो फिर जो अंदर का ज्ञान प्राप्त करना शुरू करते हैं अपन, अपना इंट्यूशन को जगाते हैं और थोड़ी हायर फ्रीक्वेंसी हो जाती है, तो ये जो प्रोसेस होता है अंदर जाने का, अपने आप को देखने का, वो है फोर्थ डिमेंशन। अब अपने आप को देखने से ये नहीं कि आप फिफ्थ डिमेंशन में आ गए। मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है, मगर थोड़ी सी डिस्टेंस आ जाती है। एक तो है थर्ड डिमेंशन में किसी ने आपके साथ कुछ किया, आपको लगा उसने मेरे साथ बुरा किया, आपने उसके साथ बुरा कर दिया, दैट्स थर्ड डिमेंशन। फोर्थ डिमेंशन में है कि किसी ने आपके साथ बुरा किया तो आपको बुरा लगा, मगर आप सोचेंगे इसमें मेरा क्या लेसन है, कुछ लेसन होगा, वो जरूर मेरा कोई टीचर होगा, इसलिए उसने मुझे मारा होगा, ऐसा कुछ इस तरह के ख्याल आएंगे कि एक लार्जर विजन है जिसके कारण सब कुछ हो रहा है। मगर ड्युअलिटी खत्म नहीं हुई है, ड्युअलिटी कॉन्फ्लिक्ट ये सब चल रही है, मगर आपका देखने का तरीका बदल गया है। फिर भी कई मेडिटेटर्स हैं, आप जानते हैं कईयों को, इवन इन PSSM देवी सर्कल में कई जगह मेडिटेटर्स हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, स्वयं का ज्ञान ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर घर आते हैं वापस और फिर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है, हस्बैंड वाइफ में शुरू हो जाती है, वट एवर दैट हैपन्स, सो द स्ट्रगल इज स्टिल ऑन। सो फोर्थ डिमेंशन इज स्टिल क्लोज टू थर्ड डिमेंशन। फिफ्थ डिमेंशन है जहां पर यूल गेट लिबरेशन, वहां पे all of this duality will just vanish, then you are just there. So fourth dimension is like a halfway, just like it's between third and five, but you have become, मेरे ख्याल से in there is one concept in Buddhism that can help with this, which is called sotapanna, first level of enlightenment, when you become a stream earner. So your path becomes focused on meditation, looking at yourself, इंट्यूशन आने लगता है, जजमेंट कम हो जाते हैं, आप एक रास्ते पे चलने लगते हो। मगर कॉन्फ्लिक्ट तभी भी थोड़ी चलती है, कम हो जाती है, बट यू आर ऑन योर वे टू द फिफ्थ डिमेंशन। या Thank you, Nandit. Perfect. So now, how does it feel, or how is it going to be the reality once we reach into the fifth dimension? So the fifth dimension is a dimension of the unconditional love. The reality that we are going to experience once we all reach there is going to be absolutely different of what we have experienced ever before. Because while third and fourth dimensions are dimensions of duality, in fifth dimension, we're going to experience unity. We're going to experience oneness. We're going to experience that all of us, we are not that separated as we think we are in the third or fourth dimension. In the fifth dimension, we are going to realize that all of us, we are just one mind. That all of us, we are just one son or daughter or one child of God, Divine Mother, Divine Father. In this fifth dimension, we're going to experience a beautiful reality in which we're going to trust so much in each one, in each other. We're going to feel that relationships are going to be based on collaboration and cooperation between us. Because when we recognize all of us as part of the same unit, as part of the same mind, as part of the same sun, let's say, then will just like come from our hearts the wish to do the best thing possible, not only for me, but for everybody else. Because here we know that the more or that the best that everybody is doing is also bringing some benefit for me. And here I also realize in the other way around that the most things that I can do to work for myself, to keep my vibrations very high, will bring a benefit for everybody. So in the fifth dimension, we are going to feel which is the impact of our inner and personal work in the collective. In the fifth dimension, we don't seek illumination as an individual process. In the fifth dimension, we seek illumination as a collective process.
where all of us, we are involved, we are connected, and we will have the greater benefit of it. वेरी वेरी प्रोफाउंड, कितनी प्यारी प्यारी बातें कही हैं फिफ्थ डिमेंशन के बारे में। फिफ्थ डिमेंशन में सच में ही पहली बार एक बड़ी एकता का अनुभव होने लगता है। अभी अपन को लगता है कि मैं और तुम और मैं और वो सब खत्म हो जाएगा। फिफ्थ डिमेंशन में सब एक मैं बन जाता है, वन माइंड। अपन सब को इतनी एकता आ जाती है, इतनी एकता। कभी आपने देखा है किसी को देखकर और आप उसको बोलो ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, एकदम ऐसा महसूस करो, एकदम एम्पैथी लाके, ये भी मैं हूँ। वो ऐसी एकता आने लगती है फिफ्थ डिमेंशन में। यू जस्ट टोटली कनेक्टेड, और उस फीलिंग से सारी दुनिया बदल जाती है कि अभी दिमाग में जी रहे हैं, माइंड में जी रहे हैं, ड्युअलिटी में जी रहे हैं, जज कर रहे हैं, बिलीफ सिस्टम्स हैं, सब कुछ अलग अलग है। फिफ्थ डिमेंशन में आ गए तो दिल में आ गए, एक दिल सबका। जैसे माँ और बच्चे का कनेक्शन इज मे बी द क्लोजेस्ट, कि एकदम एकदम एनर्जीज आर कनेक्टेड। तो पूरी ट्रस्ट आ जाती है, पूरा कोऑपरेशन आ जाता है, कोलैबोरेशन आ जाता है। क्योंकि कोलैबोरेशन कोऑपरेशन फिर भी चाहिए वननेस में, क्योंकि अगर आप अफ्रीका में हो, कोई अमेरिका में है, ऑब्जर्वेशन तो अलग अलग हो रहा है ना। तो वन कॉन्शियसनेस का ये मतलब नहीं कि दोनों ही सब कुछ ओमनीशाइंस नहीं है। तो यू आर स्टिल कोलैबोरेटिंग, क्योंकि अलग अलग इश्यूज हैं, बट इट्स कोलैबोरेशन विद टोटल हार्ट, टोटल ट्रस्ट। एकदम वो सारी जो भावनाएं ना, ईमानदारी और ट्रस्ट और ऑनेस्टी, वो सब अपने आप आ जाती है, क्योंकि आप दिल से जुड़ रहे हो, दिमाग से नहीं जुड़ रहे हो। तो फिफ्थ डिमेंशन का जो लिविंग है वो इतना, अगर आप उसको जान सके, कुछ अनुभव कर सके, तो बहुत ही प्यारी दुनिया है, और उस दुनिया की तरफ अपन जा रहे हैं, एकता की दुनिया, दिल की दुनिया। Anandaki is a message of her right now. So what she's saying, my beautiful children, here and now you're not going to be able to walk farther in your spiritual path if you do not seek for support of your brothers and sisters. This is not a process that we can do alone. This is a process that you cannot do alone. A process that you need to go with the assistance and with the support of everybody surrounding you. There are times to come in which real networks are going to be seen, in which the power of everybody is going to be much more stronger and uplifted through the connection that you can create with the other ones. Together, you're going to rise. बहुत ही प्यारा मैसेज है। मदर मेरी कमिला को बोल रही हैं कि ये जो अपन कनेक्शंस बनाते हैं एक दूसरे के साथ, भाई बहन बन के, we're all brothers and sisters, तो ये जो कनेक्शंस हैं और ग्रुप्स बन रहे हैं और नेटवर्क्स बन रहे हैं, इनकी बहुत पावर है, और इनमें अब जाना है। अकेले अकेले जो है ना, जो सिस्टम है अकेले करना, उसको थोड़ा सा रिलैक्स करके कोऑपरेट करना है, ग्रुप्स बनाने हैं, नेटवर्क्स बनाने हैं, और उसकी पावर बहुत है। अपन समझ नहीं पा रहे कितने पावरफुल है ये नेटवर्क्स। और मैं और भी कुछ कहना चाहूँगा, बट आई विल जस्ट कीप इट टू द ट्रांसलेशन, कि बहुत उसको एम्फसाइज कर रही है मदर मेरी कि नेटवर्क्स बनाना, कोलैबोरेट करना, कोऑपरेट करना अब बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। Thank you, Nanda. Okay, so I would like now to start talking about Mother Mary. I would like to introduce her. I would like to explain to you about who she is, which are her qualities.
And we're going to do this through two different ways. I'm going to talk a little bit about her, and then we're going to do a guided meditation because we really want to take you to a point in which you can feel her frequency, and that you can experience it by your own selves. So, who is Mother Mary, and which is her role in this whole consciousness shift that we are facing right now? So, Mother Mary, we all know that she is the mother of Jesus Christ. There was a moment in time, more than 2,000 years ago, in which it was required, it was very important as a part of the ascensional process of Mother Gaia, to have the visit, to have a messenger directly from the source, to come and to spread a message of love, to come and to bring us some light, because we were in such darkness in that moment that we couldn't by our own selves like connect much with our intuition or connect much with our hearts. There was moments of big confusion, and for that reason it was required for a very powerful messenger to come here, and that was Jesus. But we all know that there has been like a lot of powerful messengers for so many years before, but I'm going to talk about Jesus. In order for Jesus to be able to reach here, to come into this planet, to take a birth, it was necessary to have a very special mother. It couldn't be any mother, it couldn't be any woman. It needed to be an extension of the Divine Mother, because the task was not going to be easy. It was very important to have a mother who could host this divine frequency of Jesus Christ in her womb. Jesus Christ came with a very, very high vibration, and not any woman will be allowed to receive and to sustain that high frequency in her womb. That's why Mother Mary came before Jesus Christ to host him in her womb. It was required a mother that will know how to nurture him through love, through unconditional love, but also through wisdom, because she was in charge of guiding Jesus and accompanying him through his process of awakening, through his process of remembering, and to come into his full light in order to deliver his message. But it was also very important that the love of this mother was very pure and was very disattached somehow from suffering, because that was the only way in which the mother will not interfere in God's plans for her son, for Jesus Christ. You want to translate, Anandaji? बहुत ही प्यारा वो तो मैसेज. सो मदर मेरी बता रही हैं वो कौन है. वो हैं ऑफ कोर्स यीशु, जीसस उनकी मदर हैं. और एक टाइम था पृथ्वी पे मदर गाया, जो पृथ्वी माँ है, उस टाइम पे बहुत डार्कनेस थी और एक मैसेंजर ऑफ लव चाहिए था, समबडी, कोई जो प्यार का मैसेज लेके आए. और वो ऑब्वियसली थे जीसस. जीसस इज डिवाइन कॉन्शियसनेस. तो जीसस का आना एक बहुत ही ज़रूरी था पृथ्वी पे. ये वो बहुत ज़रूरी था जीसस का आना. और इवन लक्ष्मी जी सेड दिस, उन्होंने, दिस यू डिडंट से, बट इवन जीसस टुक सम ऑफ द कर्मा ऑफ ह्यूमैनिटी. जीसस ने जो पूरे कर्म नहीं लिए, ही डिडंट सेव यू कंप्लीटली, बट काफ़ी कर्म आपके ले लिए. तो अब जीसस जैसे की जो आत्मा थी, एकदम दिव्य आत्मा, उसको लाना था मैसेज ऑफ लव. उसके लिए कौन सा वूम्ब आता, फिर कौन मदर बन सकती उनकी. फ्रीक्वेंसी इतनी हाई थी जीसस की, ऑर्डिनरी वुमेन नहीं आ सकती थी, वो उनकी माँ नहीं बन सकती थी. तो डिवाइन मदर जो थी, जिनके सब रूप हैं, महालक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती, सब डिवाइन मदर के रूप हैं अलग अलग. डिवाइन मदर का ही एक एक्सटेंशन को आना था, और वो थी मदर मेरी. सो मदर मेरी वॉज जो एक डिवाइन मदर की, दिव्य माँ की ही एक्सटेंशन थी. उनका वाइब्रेशन बहुत हाई था. तो जब जीसस उनके वूम में आए और फिर जन्मे और बड़े हुए,
तो उनको सिखाना था प्यार के बारे में, अकारण प्यार कैसा होता है, एकदम जो पवित्र प्यार, प्योरिटी वाला प्यार, जिसमें कोई जजमेंट नहीं होता। तो वो सारा सिखाने के लिए मदर मेरी को आना था, और उनको मालूम था कि जीसस के साथ क्या होने वाला है, क्या सफरिंग आने वाली है जीसस को, उनको सूली पे चढ़ाया जाएगा, ये सब मालूम था उनको। तो ऐसी मदर चाहिए थी जो उससे अटैच या अटैच नहीं हो, उसको ऐसा ना लगे कि ये मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो उसका एक दिव्य मिशन था, डिवाइन मिशन था। तो उस डिवाइन मिशन को रिस्पेक्ट करना कि भाई जीसस आएंगे, उनको क्रूसिफाई किया जाएगा, तो भी उससे अटैचमेंट नहीं रखना, एंड लेट हिम हैव हिज जर्नी। तो वो एक बहुत हाई फ्रीक्वेंसी डिवाइन मदर एनर्जी चाहिए थी, नहीं तो नॉर्मल माँ तो एकदम परेशान हो जाती, मेरे बेटे को सूली पे चढ़ा दिया उस तरह से। तो उसको रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी था। तो वो है मदर मेरी, शी इज़ एन एक्सटेंशन, वो डिवाइन मदर की एक्सटेंशन है। और जीसस को लाने के लिए जब जब बड़े बड़े पुरुष हुए हैं, बुद्ध, महावीर, ये सब, उनकी मदर्स हमेशा बहुत ही डिवाइन होती है, और ये जीसस के साथ भी था। Thank you, Nandaji. So yes, the task that Mother Mary was going to experience here on this earth was very, very tough. It was not easy. I think that here in this group, there's a lot of mothers, and we know how it feels when we see that our sons or our daughters are being harmed or are being mistreated, which is the pain that we can experience, isn't it? So it was required very strong love, very, very pure way of loving that could be detached from suffering and at the same time could be so attached and so aligned with God's will for the highest benefit of everybody, that then she will just like go through her path with a lot of joy, with a lot of faith, with a determination in terms of the yes that she said to God when she was asked to do this job, or to take this role. Once I asked her, Mother Mary, how were you able to do that? Because it's not easy when we are incarnated in this physical body. When we experience pain, it's so difficult. How were you able to manage that? And what she said, I managed to do everything through obedience. Because my will, my personal will, was fully attached and fully aligned with God's will. I served to humanity and also to the whole creation as an instrument. I was not looking for benefit for myself. I was seeing a higher and a further vision, and I was seeking for the benefit of everybody. Mother Mary had like this beautiful combination in between her purity, her innocence, but at the same time, she incarnated all the strength of God. So there was like this beautiful combination of her feminine energy, but also with the masculine energy that allow her and support her to expand and to unfold, or the power of her heart. It was really something special what happened with her in this incarnation on earth. Through that alignment, or through that combination of her feminine energy and the masculine energy, she unfolded the most strongest force that we can never imagine. And this is the force of softness. We will never imagine that softness, that vulnerability, that innocence, that the heart force could be the most strong force in the creation. But it is like that. The whole creation was done and took place because of this beautiful flow of force, the force of softness. And Mary, Mother Mary, she represents and she incarnates this force of softness. This force of softness allowed her
to sharpen all her feminine qualities, her tenderness, her sweetness, her compassion, her maternal love, her receptiveness, her joyfulness. All of these feminine qualities were sharpened because of that inner a combination of this of her feminine strength and the masculine strength, which creates the force of softness. It's like that. Mother Mary was so humble. You can imagine how humble she is in her heart. Mother Mary worked here in a very silent way. We cannot know, or we cannot find a lot of information about her in the Bible or in different books. There is not so much things written about her because she did most of her job in a very, very silent way. By silent doesn't mean that it's not strong and doesn't mean that it's not powerful. Actually, what she did is that through her body, and through the people that she was in contact with, she was anchoring a lot of high frequency energy that was placed in this planet as seeds of compassion, as seeds of peace. She is the mother of peace and as seeds of love, of pure love. But why am I talking about seeds? Because it will take us a lot of time to understand the power of those seeds and to allow those seeds to grow and to flourish within us. Maybe at the time that Mother Mary came, maybe the time that Jesus was here, we were not being able to understand their message. But their message didn't went away when they were not in this planet anymore. Their message was planted here as beautiful seeds of peace, of joy, of love and compassion. And now that we are much more prepared, now that our hearts are much more open, that now that we are much more connected with our intuition, with our subtle senses, now we are able to nurture these kind of seeds and to allow them to grow within us. So I'll translate, okay. थोड़ा लंबा मैसेज था, I'll try to cover all of it. तो मदर मेरी कह रही हैं कि जो मदर मेरी का मिशन था उसमें एक बहुत ही मजबूत दिव्य पुरुषत्व की भी ज़रूरत थी और दिव्य नारीत्व की भी ज़रूरत थी। दिव्य पुरुषत्व इसलिए क्योंकि उनके साथ जो होना था, जीसस को क्रूसिफाई होना था, कोई माँ नहीं चाहती कि ऐसे हो उसके बेटे के साथ, और फिर भी उनको गॉड की विल रखनी थी। दिस वॉज गॉड्स विल। गॉड की विल थी कि जीसस वुड बी क्रूसिफाइड, और उन्हें ये मालूम था और उनको उस मिशन से हटना नहीं था। तो वो था पुरुषत्व। नारीत्व था उनकी सॉफ्टनेस, टेंडरनेस से उनको जीसस को बड़ा किया, बहुत ममता दी, बहुत प्यार दिया। और कभी भी जीसस और मदर मेरी की कहानी आपको मालूम है, कभी भी उन्होंने अग्रेशन नहीं दिखाया, तो वो सॉफ्टनेस भी थी। मगर ये जो सॉफ्टनेस है इसमें बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत शक्ति है सॉफ्टनेस में। वही दिव्य नारित्व है। दिव्य नारित्व का सेलिब्रेशन क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत स्ट्रांग है दिव्य नारित्व। दोनों फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी दोनों उनमें मौजूद थी। तो ये जो उनको भगवान का काम करना था, ओबीडियंस के साथ करना था, उसके लिए ये पुरुषत्व होना भी जरूरी था। तो सब में दिव्य नारित्व और दिव्य पुरुषत्व हो सकता है, और ये मदर मेरी उसकी एक एग्जाम्पल है। फिर वो जो बोल रही है मदर मेरी, दिस आई जस्ट ऐड कपल ऑफ थिंग्स। वो ये बोल रही हैं कि I just wanted to just share this. There are planets which have exploded because of a lack of Jesus and Mary, you know. तो ऐसा नहीं है कि जो पृथ्वी है इसका सर्टन था कि इसी तरह जाएगी, एनलाइटमेंट होगा, सीड्स उगेंगे, कंपैशन आएगा, बुद्ध आएंगे। ये सब जरूरी नहीं था होना। कुछ ऐसे भी प्लैनेट्स हैं जो एक्सप्लोड हो गए हैं।
मतलब इतनी फाइटिंग हो गई है वहाँ पे, साइंस डेवलप हो गई है और एक दूसरे को ख़त्म कर दिया और प्लानट एक्सप्लोड हो गया, राइट? तो जीसस का जो मिशन था वो इतना कंपैशन लाना था, और मदर मेरी का भी लाना था, कि उनके साथ जो भी हुआ, उनको सूली पे भी चढ़ाया, तो भी उन्होंने क्या कहा, प्लीज फॉरगिव देम फॉर दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। मतलब एकदम पूरा कंपैशन का मैसेज, लव का मैसेज, अनकंडीशनल लव। तो उन्हें उन्होंने जो बीज बोए, बोए जो पृथ्वी पे, प्यार के, अकारण प्यार और ममता के, खुशी के जो बीज बोए, सब कुछ सहा उन्होंने। उस वो जो बीज है वो बढ़ते गए और अब क्रिश्चियनिटी इज लाइक द बिगेस्ट रिलीजन। कितना, मतलब कहाँ से आया और कितना बढ़ गया, सारे बीज उग गए अब। तो वही एक मैसेज है मदर मेरी का, कि इसके लिए डिवाइन फेमिनिन होना भी जरूरी था, दिव्य नारित्व होना जरूरी था। एकदम जब अपन मदर मेरी के बारे में सोचते हैं तो एकदम ममता के बारे में सोचते हैं, और उनका जो मिशन था इतना स्ट्रॉन्ग मिशन था, कोई माँ नहीं चाहती कि उसके बेटे को सूली पे चढ़ाया जाए, और इस नॉलेज से आई है वो। उनको मालूम था क्या होने वाला है, क्योंकि एनलाइटन थी वो, 5 साल में एनलाइटन हो गई थी। तो उन्हें पता था क्या होने वाला है जीसस के साथ, और फिर भी एकदम अनअटैच रहना, खुशी में रहना, और जो उसका मिशन है उसको करते रहना, वो है दिव्य पुरुषत्व। दोनों का मेल है मदर मेरी में, और वो मैसेज सुना रही थी। Nandati. Sometimes I add a few things because somehow it makes even more Yes, delightful the please. messages. It's a pleasure Yeah. to hear all your knowledge because you have received so much information as well, Nandati. So everything that you want to Oh, share, please do it, and also in English. I also would like to listen to it. Thank you. thank you. So, Mother Mary is always telling us that whenever we feel suffering, whenever we feel sad, or even if we are worried about anything, or if we are anxious about anything, just come and look for refuge in her heart. Because if there is someone that really knows about suffering in this planet, it is Mother Mary. She went through so many things, and she will teach us. We will see. I will bring all this knowledge to you over the workshop. But the one who really will teach us how to face such difficulties without creating attachments with the negative emotions, like hatred, or like wanting to have revenge, or whatever it might be. Is Mother Mary, because what she did in order to come through all those obstacles was to always come in the silence of her white heart. I like to call it like that because that is how I see it. So she used to come always to the silence of her white heart. And in the silence of her white heart, she could ponder things. She could illuminate every situation that she was going through with her inner wisdom, with her pure consciousness. The wisdom and the pure consciousness, what I have understood, it's something that is really connected with our heart chakra. It's not something coming from the mind, it's coming from the heart chakra. So whenever she was suffering for anything, she never repress or suppress her feelings. She just allowed herself to come into silence, to feel whatever she was feeling, and then to bring everything to her heart, where she could illuminate and bring light to the circumstances that were creating that suffering. So through that illumination, she will have the wisdom enough to to see the bigger picture, to understand that everything that was happening was just like in this present moment, but that everything was for the highest um, benefit of all mankind. And when she could realize about it, it was like a transmutation of that energy of the suffering into the joy, because she could only experience joy to know that the present situation, the present moment, was going to bring
joy, liberation, happiness to all her children, because all of us, we all of us are her children. कितना पावरफुल मैसेज है। मदर मेरी बात कर रही हैं वाइड हार्ट, बड़े दिल के बारे में, एक बहुत ही शांत दिल। क्योंकि आपकी जब सफरिंग होती है, एंजाइटी होती है, आपका किसी ने आपको कुछ कर दिया, किसी ने अत्याचार कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो अपन इमोशंस में आ जाते हैं। और मदर मेरी समझा रही हैं कि इमोशंस की जगह अपने दिल के चक्र को महसूस करिए, उसकी साइलेंस को महसूस करिए, और वहाँ पर बहुत पावर है। इतनी पावर है कि आप फॉरगिव कर सकते हैं, इतनी पावर है कि आप किसी को एकदम प्यार कर सकते हैं जिसने आपके साथ बुरा भी किया। सब दिल में है। वाइड हार्ट, साइलेंस ऑफ द वाइड हार्ट, एक आपका जो बड़ा महान दिल है। दिल दिल दिमाग से बहुत बड़ा है। दिमाग तो छोटी सी चीज़ है। अगर आप दिल के चक्र को एक्टिवेट कर दे तो इन्फिनिटी है यहाँ पर। और तो बोल रहे हैं कि कभी आपकी सफरिंग हो तो मदर मेरी को आप यूज़ करिए, उनको, उनकी शरण में जाइए, तो वो आपकी सफरिंग को ले लेंगी, क्योंकि वो जानती हैं सफरिंग के बारे में। जीसस उनके बेटे थे, वो सब जानती है सफरिंग के बारे में। फिर वो बता रही हैं एक बहुत बड़ा मैसेज कि जब उनका दिल इतना एक्सपैंड हो गया तो उन्होंने देखा जीसस के मिशन से ह्यूमैनिटी का क्या होने वाला है, मानवता का क्या होने वाला है। मतलब कितना इनलाइटनमेंट होगा, कितनी सारी ह्यूमैनिटी सेव हो जाएगी। उसकी जो खुशी आई, तो वो जो सफरिंग थी उनकी और जीसस की, उसको भी उन्होंने खुशी के रूप में देखा, क्योंकि उसके होने से जो सारे बीज बोएंगे, सारे कंपैशन, लव और एनलाइटनमेंट आएगा दुनिया में, उससे पूरी मानवता के लिए बेनिफिट होगा। तो वो जॉय था, वो उन्होंने महसूस किया। तो कई बार अपने को खाली अपने आप को बड़ा बनाना है, खाली दिमाग से सोचेंगे तो सफरिंग में रहेंगे। कुछ हो रहा है तो एकदम दिल में आइए, बड़े दिल में आइए, शांति महसूस करिए, इमोशंस उसमें वाइप आउट हो जाएंगे। बड़ी पिक्चर को देखिए कि क्या हो रहा है उसके कारण, और फिर आपको पता पड़ेगा, यस देयर इज जॉय फॉर ह्यूमैनिटी, उस तरह से आपको आएगा। और ये आई डोंट वांट टू गो ऑन, बट या दिस इज सो ट्रू about even other enlightened beings, this big heart silence, wide heart silence, said, right? Yeah, that is a place of refuge. And I It's felt like it when you were saying it. I felt it in my heart that if people just live here, there's not so much thinking anymore. You just put your hand here and just feel, and just when you're talking to somebody, there's not much mind moving in. You just come to love, and that is the message. To come to the silence of the wide heart. it's like that. Thank you, Nandaji. So I don't know if maybe everybody wants to go to our guided meditation and to tap into Mother's Mary frequency and energy. So let's do that. तो अब मदर मेरी का एक ध्यान है जो चैनल किया है कमिला जी ने, वो ध्यान अब कराएंगी। मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। आई थिंक व्हाट वी गोना डू इज, कमिला जी, वी आर गोइंग टू translate maybe sentence by sentence. Like you also, when you do guided meditations, you speak a sentence and then you're quiet, right? So right after you speak, I will speak, and then you speak. Then we'll do it like that. Okay. Okay. Excellent. So everybody please sit in a very comfortable position तो and gently सब एक आरामदायक स्थिति में बैठे। यस। and gently close your eyes. और धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। Inhale and exhale. एक गहरी सांस अंदर और सांस छोड़े। Inhale and relax. सांस अंदर और रिलैक्स करिए। And last time,
Take a deep inhale and let go. और आखिरी बार सांस अंदर और जाने दीजिए। Bring your attention to the sounds of the environment. अपना ध्यान जो भी एनवायरनमेंट में आवाज़ें हो रही हैं उनकी तरफ ले जाएं। Listen to them, listen to those sounds, and feel in harmony with those sounds. और इन आवाज़ों के साथ एक सामंजस्य महसूस करें, हार्मनी महसूस करें। Inhale and exhale. एक गहरी सांस लें और छोड़ दें। Now bring your attention to your thoughts. अब अपना ध्यान अपने विचारों पर ले आएं। Regardless of whether they are pleasant or unpleasant, just accept them. कैसे भी विचार हो, सुखी विचार, दुखी विचार, उनको स्वीकार करें। Bring the attention to your chest and start connecting with your breath. अपनी छाती पर ध्यान ले आएं और कनेक्शन करें। Now bring your attention to your belly, to your stomach, and connect even deeper with your breath. और अपने पेट की तरफ ध्यान ले आएं और सांस के साथ और भी ज़्यादा कनेक्ट हो जाएं। Start visualizing a group of angels, of light beings, descending and coming close to you. कल्पना कीजिए कि एक एंजल्स ये फरिश्तों का ग्रुप के समूह नीचे उतर रहे हैं और आपके करीब आ रहे हैं। Look at their hands. They are pointing a path of light that is opening in front of you. तो ये फरिश्ते एक लाइट दिखा रहे हैं और एक रास्ता दिखा रहे हैं। Take the hand of one of these angels, of one of these light beings, and start following the path. कोई भी एक एंजल या फरिश्ते का हाथ थाम लें और उस रास्ते पर चलना शुरू कर दें। Step by step, you come higher and higher, feeling lighter with each step. एक एक कदम के साथ आप ऊंचे और ऊंचे जा रहे हैं और ऊंचे जाते जाते एक अनोखा हल्कापन महसूस करते हैं। You see how this path is taking you to a beautiful place on the top of a mountain. आप देखते हैं कि ये रास्ता आपको एक पहाड़ की चोटी के ऊपर एक खूबसूरत जगह पर ले जा रहा है। Nature and its majestic presence are waiting for you. प्रकृति और एक बहुत ही अद्भुत प्रेजेंस है जो आपकी प्रतीक्षा कर रही है। You have reached now. Feel a warm and pleasant breeze touching your face. अब आप पहुंच गए हैं। अपने चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी हवा के झोंके को महसूस करिए। Feel the sun shining gently upon you. सूरज को चमकता हुआ महसूस करिए। Hear the birds singing because of your presence. आपकी उपस्थिति से पक्षियों को भी गाते हुए सुने। Notice how safe you feel there. आप यहाँ एकदम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। Feel how serene and peaceful atmosphere surrounding you.
infuses calmness within you. एक बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण है आपके आसपास और एकदम भीतर भी आप शांति महसूस कर रहे हैं। Raise your head and visualize how hundreds of flower petals of different colors start falling slowly and gently from the sky. अपना सिर उठाइए और कल्पना करिए कि कई फूल की पत्तियां आकाश से धीरे धीरे आप पर गिर रही हैं। All the flowers, all the petals of flowers are covering the ground with beautiful colors and leaving a beautiful scent of roses that really uplifts your energy. तो ये विभिन्न रंगों के जो फूल की पत्तियां हैं ये जमीन पर गिरकर पूरे सुंदर रंगों से ढक देती है और एक गुलाब की सुंदर सुगंध आती है जो आपकी ऊर्जा को ऊंचा उठाती है। In the middle of the petals cascade, you see how a beautiful lady, dressed by the rays of the sun, descends from heaven. आप इन फूलों की पत्तियों के बीच में एक बहुत ही सुंदर महिला को देखते हैं जो सूरज के किरणों से सजी हुई है। She's wearing a crown of 12 stars and a pale blue mantle that covers her head. उन्होंने एक 12 सितारों का मुकुट और एक हल्के नीले रंग का गहना पहना हुआ है। Notice that she is smiling at you. वो आपको बड़ी एक मुस्कान से देख रही हैं। And just realize how her smile makes you want to smile back to her. उनकी प्यारी मुस्कान को देखते हुए आप भी मुस्कुरा देते हैं। Become aware of how her beauty caresses your soul. उनकी सुंदरता उनकी आत्मा का दर्शन करा रही है। Her loving presence makes you recognize within her the unconditional love of the Divine Mother. उनकी प्रेम पूर्ण उपस्थिति आपको आपके भीतर से उनकी दिव्य माँ का रूप और उनके प्यार की पहचान करा रही हैं। Her aura exudes so much tenderness. उनकी आभा में इतनी कोमलता है। You feel surrendered to her. आप एकदम सरेंडर के भाव में आ जाते हैं, समर्पण के भाव में। In a deep, blissful state, you feel absolutely in peace. आप एक गहरी आनंदमय अवस्था में पूरी तरह से शांति और प्यार का अनुभव करते हैं। Marbled with her light, you experience fulfillment. उनके प्रकाश से अचंभित आप तृप्ति का अनुभव करते हैं। In this moment, nothing is missing anymore. इस समय आप किसी चीज की कमी महसूस नहीं कर रहे हैं, सब कुछ मिल गया है। You are fully connected with the present moment. आप पूरे वर्तमान के क्षण से पूरी तरह से जुड़ गए हैं। You feel loved, you feel seen, you feel enough, you feel complete. आप उनके प्यार को महसूस करते हैं, स्वयं को पूर्ण महसूस करते हैं, पर्याप्त महसूस करते हैं। Her love makes you release all your heaviness. उनके प्यार से सारा जो भारीपन था उससे पूरी मुक्ति महसूस करते हैं।
Feeling light awakens a deep state of gratefulness in your heart. उनकी लाइट से आपके हृदय में एक कृतज्ञता का, ग्रैटिट्यूड का भाव जागता है। Her radiant maternal presence takes you to a state of oneness with that moment, with yourself and with her. उनके मात्र दीप्तिमान उपस्थिति से आपको अपने और उनके साथ एकता की स्थिति महसूस हो रही है। Feel the power of her love, her humbleness, her softness, the delicacy of her gestures, her innocence, and her immaculate heart. आप उनके अद्भुत प्यार की शक्ति, उनकी विनम्रता, उनकी कोमलता, उनकी मासूमियत और उनके दिल को अपने दिल में महसूस कर रहे हैं। Feel her joy while she stares at you. जब वो आपको देखती हैं प्यार से और मुस्कुराती हैं तो उनकी खुशी महसूस करें। Be aware of her smile, but she is looking at you. उनकी मुस्कुराहट को महसूस करें। She देखें। knows you. She वो knows you. वो आपको जानती हैं, पूरी तरह से जानती हैं। She trusts you. वो आप पर पूरा भरोसा करती हैं। She loves you so much. वो आपको इतना इतना प्यार करती हैं, बहुत प्यार करती हैं। You can notice that through her gaze, your true essence is revealed. आप उनके आपके असली सार को वो देखती हैं और आंतरिक सुंदरता को देख सकती हैं, देख रही हैं। She can only perceive your inner beauty. आपकी जो अंदर की एकदम सुंदरता वो पूरी देख रही हैं। That makes you remember and feel that your inner beauty is your true nature. उससे आपको महसूस होता है कि आपकी जो आंतरिक सुंदरता है वो ही आपकी वास्तविक नेचर है, स्वभाव है, वो ही आप हैं। She rejoices in your light. वो आपके आंतरिक प्रकाश से बहुत आनंदित होती हैं। In such deep connection, you start hearing the secrets of her heart. ऐसे गहरे प्यार के संबंध से आप उनके दिल के राज, उनके दिल की सीक्रेट्स सुनने लगते हैं। You realize that her biggest wish is that you accept your own light. आपको महसूस होता है कि उनकी सबसे बड़ी इच्छा यह है कि आप अपने स्वयं के प्रकाश को जानें। She wants you to accept your role in this creation, your true essence, and your heritage as son or daughter of the Divine Father and Divine Mother. वो चाहती हैं आप जानें कि आपकी इस सृष्टि में भूमिका है, अपने सच्चे सार और अपनी विरासत और अपने आप को एक दिव्य माँ और दिव्य पिता के पुत्र या पुत्री के रूप में स्वीकार करें। She wants you to remember who you truly are. वो चाहते हैं कि आप जाने कि आप सच में कौन हैं। She has a message for you tonight. उनके पास आपके लिए एक संदेश है। Today, you have come to me. It's time to remember
about me and about you. आज तुम मेरे पास आए हो और अब समय आ गया है कि तुम जानो मैं कौन हूँ और तुम कौन हो। You and I have known each other since the beginning of time. You are my beloved daughter, my beloved son, and I am here to remind it of you. हम एक दूसरे को समय की शुरुआत से ही जानते हैं और तुम मेरी प्यारी बेटी हो या बेटे हो और मैं इसको याद दिलाने के लिए यहाँ पे हूँ। I recognize you in your divine spark, and I see the tenderness, the love, the innocence that lives within you, even if you don't see it in the same way I do. मैं तुम्हारी दिव्यता को पहचानती हूँ, तुम्हारे भीतर की कोमलता को जानती हूँ, तुम्हारे प्रेम को पहचानती हूँ, तुम्हारी मासूमियत को देखती हूँ और भले ही आप अपने आप को स्पष्टता से ना देखें मगर मैं देखती हूँ। I recognize the work that you have done on yourself. मैं पहचानती हूँ तुमने अपने स्वयं पर कितना काम किया है। That's what has brought me closer to you. और यही तो मुझे तुम्हारे पास लाया है। Every step you have taken to get to know yourself better, your courage to open your heart, to see and to recognize the light within you or within others, has helped you to be more in resonance with the universal love. एक एक जो कदम तुमने उठाया है, अपने दिल को खोलने का साहस किया है और अपने अंदर प्रकाश को देखा है, दूसरों के भीतर प्रकाश को देखा है। एक एक कदम से तुम मुझे पहचान रहे हो। Thank you for expanding love and therefore to embody God's essence. प्रेम का विस्तार करने के लिए और ईश्वर के सार को रूप देने के लिए बहुत धन्यवाद। May the grace of God descend upon you. ईश्वर की कृपा हमेशा आपके साथ रहे। Now she brings her hands towards your chest, वो अपने हाथों को आपकी छाती की ओर ले जाती हैं and with her holy fingers, she removes whatever might be blocking your heart center. और वो अपनी पवित्र उंगलियों के साथ आप में उन भावनाओं को दूर करती है जो आपके हृदय को अवरुद्ध कर सकती हैं। A blessing from her brings you a pleasant feeling of warmness in your heart. उनके आशीर्वाद से आपके दिल में एक सुकून महसूस होता है And you see how a cascade of golden light is flowing from you. आप देखते हैं कि कैसे आपके पास एक सुनहरी रोशनी झरने की तरह बह रही है। Observe how the light emanates in all directions. देखिए ये प्रकाश हर दिशा में फैल रहा है। This golden light coming within you covers your head, your face, your neck, your shoulders, your arms, your stomach, your hips, and your legs. ये सुनहरा प्रकाश आपके सारे बदन, आपके सिर, चेहरा, आपकी गर्दन, आपके कंधों, आपकी बाहों, आपके पेट और पैरों सब जगह फैल रहा है। Feel how the warm and radiant light
is gently and lovingly surrounding you. महसूस करें कि ये प्यारा प्रकाश कितने आपके चारों तरफ प्यार से फैल रहा है। This makes you feel relaxed and surrender to the divinity that lies within you. इससे आप एकदम तनाव मुक्त महसूस कर रहे हैं और अपने भीतर मौजूद दिव्यता में समर्पण कर रहे हैं। Observe how this light that is embracing you starts separating from your body and forming a warm, luminous golden sphere that surrounds you. ये प्रकाश जो आपके चारों तरफ है वो अब आपके शरीर से अलग होके आपके चारों ओर एक चमकीला सुनहरा गोले का निर्माण कर रहा है। You feel protected, you feel happy, you feel at home. आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, आप खुशी महसूस कर रहे हैं। You are in the womb of the Divine Mother. आप दिव्य माँ के गर्भ में हैं। You are one with her. आप उनके साथ एक हो गए हैं। She nourishes you, supports you, she welcomes you. वो आपका पोषण करती हैं और आपका स्वागत करती हैं, आपको ममता देती हैं। Enjoy this moment of togetherness. ये साथ होने के पल का आनंद महसूस करें। Some words start beaming from Mother's heart. और ये शब्द उनके दिल से निकलने लगते हैं। You are the light of God, my beloved child. तुम ईश्वर की रोशनी हो मेरे प्यारे बच्चे। I have been always with you and I will always be. मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। Notice how your heart answers with a lot of joy. और देखिए कि आपका दिल भी कितनी खुशी से जवाब दे रहा है। She allows you to observe yourself in her presence and to recognize the wonderful being that you are, worthy of all divine love. वो आपको अपने आप को देखने दे रही हैं और आप अपने आप को अद्भुत प्राणी के रूप में पहचानने की अनुमति दे रही हैं। आप हर तरह के दिव्य प्रेम के योगी हो। Lovingly, she whispers from her heart, what I love the most about you is. वो बहुत प्यार से कहती हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद तुम्हारे बारे में है। What did you receive is a personal message for you. क्या आपने सुना? ये एक पर्सनल मैसेज है, वो आपको चुपके से बता रही हैं। सुनने की कोशिश करिए। क्या बोला था उन्होंने? मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा पसंद क्या चीज़ है? अब आप इसको फिल इन द ब्लैंक करिए। वो आपको प्यार से बता रही हैं। सुनिए। Listen again. What I love the most about you is allow her message to come to you. फिर से सुनिए। मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा पसंद बात क्या है? जो उनका संदेश आ रहा है। What I love the most about you is.
Listen to her words and keep that personal message in your heart. उनकी बात सुनो और उनका जो संदेश है उन उसको अपने दिल में रखो और ये ही मदर मेरी की गिफ्ट है, उपहार है। Is here because she wants to give a gift for you, a gift to you. वो एक गिफ्ट दे रही हैं आपको। Breathe softly while your heart rests in joyful peace. सांस लें आराम से और सांस छोड़ें और अपने दिल की खुशी को महसूस करें। Anytime that you need to remember about your strength, about your power, about your light, and just come to me. कभी भी अपनी शक्ति को जानना हो, अपनी लाइट को जानना हो तो मेरा ध्यान करिए। I am your mother. You are my beloved child, and you will always be safe here in my womb. मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरे बेटे या बेटी हो और तुम हमेशा मेरे पास सुरक्षित हो। My love is always coming to you in many, many blessings. मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे पास आएगा, आ रहा है और तुम्हारे को कई सारे आशीर्वाद। My heart is full of gratefulness and joy because you are close to me. मेरा दिल प्यार से भर गया है क्योंकि तुम मेरे इतने करीब हो। What a beautiful miracle of God to get you to remember who you truly are. एक मिरेकल है कि तुम्हें याद है कि तुम कौन हो। Whenever you need me, you can call me. जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो मुझे याद करो। I'm hidden in the white space of your silent and wide heart. मैं यहीं पे हूँ मेरे बड़े दिल की शांत बड़े दिल में तुम्हारे साथ हूँ। Feel how the love, the Divine Mother, is awakening something within you that will remain. जो दिव्य माँ ने तुम्हारे दिल में जगाया है वो हमेशा, वो प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। Smiling gently and slowly. Inhale and exhale. Visualizing how this golden sphere that is surrounding you becomes smaller and smaller. धीरे धीरे सांस लीजिए। See how this sphere of golden light that has been carrying you is approaching to your skin.
See how this sphere of light is taking now the body, the shape of your body. और ये जो लाइट का गोला है ये आपकी बॉडी की शेप ले रहा है अब। Being covered by this golden light, let you know that whenever you want, you can activate this sphere of love, light, and peace. इस सुनहरी लाइट जो आपके बॉडी को कवर कर रही है उसमें कभी भी उसको याद करिए और आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा प्यार से, मदर मेरी से। Whenever you seek protection, you can come to the womb of the Divine Mother. आप कभी भी दिव्य माँ के गर्भ में आ सकते हैं जब भी आप को ज़रूरत हो। Inhaling and exhaling softly and gently, observe the little angels coming towards you again. Speak a little louder, I could not hear that. Inhaling and exhaling softly and gently, observe the little angels coming towards you again. तो सांस अंदर लेते हुए छोड़ते हुए महसूस करिए कि ये जो फरिश्ते आपकी तरफ आ रहे हैं। They greet you joyfully with a warm smile and show you the path of light again. It's time to return. तो वो आपका स्वागत करते हैं और आपको बता रहे हैं कि अब समय आ गया है वापस जाने का। Recharged with divine energy, you start taking one step at a time. और दिव्य शक्ति के साथ आप एक एक कदम ले रहे हैं। Along the way, with each step, you feel more grounded and connected to your physical body. एक एक कदम के साथ आप अपने शरीर से जुड़ रहे हैं और अपने आप को पूरा महसूस कर पा रहे हैं। Inhale and exhale. सांस अंदर लीजिए और बाहर छोड़िए। You're reaching now. Feel the connection with the chair that is holding your body in your room. और अब आप वापस अपनी कुर्सी पर बैठे हैं उससे आप कनेक्शन महसूस करिए। Inhale and exhale. You're back at your place. सांस अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए, अब आप वापस आ गए हैं। Become again fully aware of your body and gently move your head. Slowly move your hands, your fingers, your toes. अपने शरीर का पूरी अवेयरनेस में आ जाइए और अपने हाथों को, उंगलियों को, अपने सर को थोड़ा थोड़ा महसूस करिए। And whenever you feel ready, slowly open your eyes. और जब भी आप रेडी हो आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। Let's take together a deep breath in and breathe out. सब साथ में एक लंबी सांस अंदर लीजिए और बाहर। How do you feel? How was it? The gallery view on. It was a pleasure guiding you. I really hope that you have the opportunity to feel her energy, to feel within her womb, to receive the words, the messages from her heart.
recognizing you, recognizing your light, honoring you. Because that's what she wants, that you remember, all of you, who you truly are. मदर मेरी यही आपको बताना चाहती हैं, आपको दिखाना चाहती कि आप अपने आप को पहचानिए, आप कौन हैं सच में, और उनके कनेक्शन से, उनके प्यार से, इस ध्यान से शायद आपको ये महसूस हुआ होगा. I hope that these words that you received in your heart will remain within you. And whenever you have any tough moment, you come back to these words, because they will remind you of your power. ये जो शब्द सुने हैं इनको अपने दिल में रखिए और इनको इनको यूज़ करिए अपने दिल में आने के लिए. जब भी कोई मुश्किल आए तो वापस आ जाइए इन शब्दों से मदर मेरी के पास, अपने दिल से जुड़िए उनसे. I'm just reading some messages that you are placing here. Some of you are writing about like experiencing like kind of rotation in your stomach. Some felt that's like some warmness or coldness sensations. Some of you are talking about before about the message that you received. It can happen always that we connect with the divine. There's an energy shift in our system, and we can experience all of those things. So I'm very grateful with all of you for having shared this beautiful time with Ananda ji, with Asha ji, with me. I think that now it's time to rest. Thank you so much. Thank you so much, Anandji, Camilla. It was so wonderful. It was so beautiful. It was so connected. It was so much. Thank you. Thank you for being with us. आनंद जी, आपने इतना सुंदर ट्रांसलेशन किया कि एकदम मतलब ऐसा लग रहा था कि आपसे अच्छी हिंदी हो नहीं सकती. मतलब इट्स ब्यूटीफुल. एंड कैमिला एकदम मदर मैरी को एकदम ऐसे, यू नो, this is my very first experience with Mother Mary so closely. It is so beautiful, so beautiful. Thank you so much. Thank you. Thank I you so could feel, I can so resonate with Mother Mary energy. Yeah. You, Camilla, Yeah. so resonant. You remind us of her, you know, the softness that you have and the way you speak. It is just beautiful. Yes. It's a pleasure for me to bring Mother Mary to this space. I think that she's very happy to have the opportunity to connect with all of us tonight. It's a blessing for all of us. So thank you. Thank you so much. We Thank could you have so taken much. questions, but it's 11:15, so I don't think we will today. तो आज तो कुछ सवाल जवाब नहीं होंगे क्योंकि 11:15 बज गए हैं. तो कल we will see tomorrow. Yes. Okay. Thank you so much. Thank Namaskar. you सबको. Namaste, Camilla. Yes, thank you so much. Thank you. Thank you, Anandaji. Thank Thank you, Ashaji. Thank you for Thank you. each one of the hearts that connected to this Thank you. workshop. Thank you. Thank you so much. Thank Thank you. you, Thank you. Camilla. Thank you so much. Take care, Thank everyone. you. Love you, Love, love love, you. thank you. Thank you, Love you, madam. sir. Thank you so Thank much. you, Anand Thank sir. you. Thank you, Camila Camilla ji, ma'am. Anand ji, Asha Love ma'am. you, Thank love you you, so love you, love much. you. Asha Love you ma'am. so much. Gratitude, gratitude. Thank you. Thank you, ma'am. Lots of love and gratitude. Lots of love. Thank you. Thank you so much. Full of love energy. Love you. Thank you, thank you, thank you. Love you all. Love you. Thank you. Thank Love you. you. Thank Love you you. so much. Love you. Thank you so. Love you, And ma'am. today, Anandji was live and so much people, so many people Thank you. connected, and hope कि कल हमारा 500 पूरे हो जाएंगे. Wow. Yes. God bless. God bless. Thank you so Yes, much. Anand. Yes. Okay. Bye bye. See you Yes. Love tomorrow. you, sir. Bye, Bye. sir. Good Thank night. you, thank you, thank you. Love you. Good night. Bye. Good night. Bye. Good night. Good night.
Love you, Camilla. Thank you for your meditation. नहीं दिख रहा. Good night, all masters. Good night. Good night. Good night. गुड नाइट. And a गुड नाइट wonderful बोलने का night. मन ही नहीं कर रहा है. ऐसा लग रहा है ऐसे ही चलता रहे यार, सुनते रहे. Have a peaceful and wonderful night. Bye. Sweet dreams, all of you. Thank you. Have a divine night. And baby की छोड़ दो.